Very good morning, students. Let's begin with our next chapter, chapter number 5, separation of substances. So this is a part of your FA2 exam. Please go through this video carefully and read your book. This chapter is very lengthy, students, and go through each and every topic, whatever given in your book. So what we're going to cover in this chapter is why do we need to separate different substances? What are the different method of separations in a dry method also and in the liquid form also, and what are the different mixtures that we find around us. So let's begin. What is separation? Separation क्या है? Separation means removal of substances from a mixture of two or more substances. So why there is a need of a separation? So that we can get a pure form of a substance, isn't it? As you already know that most of the substances we find in nature are not in their pure form, isn't it? Like air contains oxygen, nitrogen, carbon dioxide and water vapor. Drinking water contains dissolved salts and air. Such substances called impure substances or mixtures. So if I'm taking the word mixture here, that means the whatever particular substance that we are taking, that is an impure form and we have to make it pure by separating. So for example, there are a few more examples which is given in this slide. Is separating stones from rice, separating tea from tea leaves. While whenever you make a tea, you always sieve the tea leaves, isn't it? Churning milk to obtain a butter. You must have seen your mother doing that. So why do we separate substances? हम substances को क्यों separate करते हैं? To obtain different but useful components. As per we have talked about in the definition only, that there is what do we have understood in this definition? That is a removal of substances from a mixture of two or more substances. So from those substances we are attaining the useful components. To remove non-useful components. For example, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप चाय बना रहे हैं उसमें non-useful substances क्या है? Tea leaves है, and you are getting a useful substance that is a tea. So to remove impurities or harmful components, if the component is having any harmful components, अगर उसमें कोई harmful components है तो भी हम separation की technique से उसको हम pure form में convert कर सकते हैं. To group substances of different sizes. For example, if I talk about अगर आप rice flour को आप सीव करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि आप उसमें से husk particles को remove कर देते हैं and the flour you get it so that आप उससे आटा क्या कर सकें, knead कर सकें, isn't it? ताकि उससे आप dough बना सकें, isn't it? So to group substances of different sizes, हम उसे different sizes में हम उसको क्या कर सकते हैं, convert कर सकते हैं. So method of separation, बेटा हम आज ये जो method है इसमें this is a dry technique that I'm telling you, that is the first one, that is hand picking. So used for separating large size impurities like stones and husks from rice, wheat or pulses. You must have done at home also. आपने मम्मी को भी देखा होगा, आपने खुद भी किया होगा. राइस से हम उससे हस्क पार्टिकल्स और स्टोन्स को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं. तो पहली टेक्निक जो सेपरेशन की है वो है हैंड पिकिंग. Second one is threshing. Threshing में क्या है? Have you ever seen or a wheat or a paddy leaf after harvest? आपने देखा होगा harvesting के बाद. What did you see? आप क्या देखते हैं? You must have seen bundles of stalks drying in the sun, isn't it? The number of grains in stalks is very large and so they cannot be easily removed from them. Separation of these grains is carried out by spreading and beating stalks on the ground. और काफी लोगों को आपने देखा होगा वो जो बंडल्स ऑफ स्टॉक्स होती हैं उसको फार्मर्स अपने हाथ में लेते हैं और जोर जोर से एक हार्ड चीज में जोर जोर से इसको मारते हैं ताकि उससे ग्रेन्स जो है वो सेपरेट हो जाए. So separation of these grains is carried out by spreading and beating stalks on the ground, and this process of separating grains from stalks is called threshing. So threshing is also done with the help of bullocks. In big farms, a machine called thresher is used to thresh the large quantities of grain. बट आजकल बेटा थ्रेशिंग की जो टेक्निक है, एक नई मशीन आ गई है, साइंस की टेक्नोलॉजी ने जैसे जैसे एडवांसमेंट किया है उसको हम बोलते हैं कंबाइन हार्वेस्टर. एज पर इसका नाम है कंबाइन. इसमें बेटा हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं और इससे थ्रेशिंग भी हो जाती है साइड बाय साइड. तो जो ह्यूमन लेबर है वो कम हो जाता है. ओके, सो द नेक्स्ट टेक्निक इज विनोइंग. कि विनोइंग क्या है?
used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air. For example, separation of lighter husk particles from heavier seeds of grains. So winnowing technique में बेटा मेथड ऐसा है जिसमें हम heavier और lighter components को side by side जो है उसको separate करते हैं. ये दोनों का mixture है, heavier component भी है इसमें और lighter component भी है. और इसको कैसे separate करते हैं हम? With the help of a wind. ये मेथड ऐसा है जनरली जो फार्मर्स यूज करते हैं टू सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन्स आफ्टर थ्रेशिंग. थ्रेशिंग के बाद जो आपके पास जो कंपोनेंट जो मिक्सचर आपको मिलता है ग्रेन्स का और हस्क पार्टिकल्स का उसको सेपरेट करना जरूरी होता है. द मिक्सचर ऑफ ग्रेन्स एंड हस्क इज मेड टू फॉल फ्रॉम अ हाइट. जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, द लेडी इज स्टैंडिंग ओवर देयर एंड शी इज होल्डिंग द बास्केट विद दोज कंपोनेंट्स एंड आफ्टर दैट they have to check the direction of a wind. If they don't do so, they usually use a fan. So grains and the heavier of the two fall to a side, forming a large heap of their own, and the husk being lighter blows away easily and forms a separate heap at a distance. Okay, so this is how winnowing technique has been done. So the second technique and the fourth technique is sieving. So beta sieving में क्या होता है? आपने देखा होगा कि sieve इस्तेमाल किया जाता है एक तो चाय छानने में, एक तो आटा छानने में, और आपने देखा होगा कि काफी जगह जहाँ पे घर वगैरह कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं वहां पे लेबर्स क्या करते हैं, बड़ी सी छाननी जो होती है उनकी सीवर जो इतना बड़ा सा होता है उसमें वो बिग होल्स होते हैं जिससे हम क्या सेपरेट कर सकते हैं, पेबल्स को, छोटे छोटे पत्थरों को, एंड स्टोन्स फ्रॉम द ग्रेवल. Gravel is bajri. So used when component of a mixture have different sizes, for example pebbles and stones removed from the sand. So this method is used to separate components of a mixture which differ in particle size. Look at the following example. Like as you can see in the picture, a sieve a kind of a strainer की तरह होता है वो, with small holes attached to a wooden or iron frame, is used to separate bran from the flour. So the sieve allows fine flour particles to pass through while retaining the bran, and which is larger in size. To remove stones from wheat, sieve with big holes are used. The sieve allows stones to pass through the retained wheat. So at construction sites, that what I have told you, that small pebbles and stones are removed from the gravel, and these are small sand particles with the help of a sieve. That I have told you that we called it as bajri. And this sieve has big holes and it is tilted on a stand for the process. और इस प्रोसेस के लिए उस स्ट्रेनर को, सीव को एक पर्टिकुलर एंगल में टिल्ट किया जाता है ताकि जब भी अगर उसमें बजरी डाल रहे हैं तो वो सैंड को पेबल से अलग कर सके. So from the above example, we conclude the separation by sieving is possible only when the particle size of one component is smaller than the size of the holes in the sieve, and the size of the particles of other component is larger. So under this we have covered these topics. So there are few more which I have precisely explained here. The same thing, handpicking, like it is the simplest method of separation of substances, and this method is used only when unwanted material is in the small quantity. Moreover, shape, size or color of the unwanted material is different from that of a useful material. जैसे आपका example यहाँ पे दिखाया गया है, pebbles, broken grains, insects होते हैं, उनको easily separate कर सकते हैं हम wheat pulses by the high hand picking technique. So the second one, threshing. थ्रेशिंग में हमने बात की कि हम सीड्स को सेपरेट करते हैं हार्वेस्टिंग स्टॉक से. सो इस टेक्निक को कंडक्ट करने के लिए मैनुअली किया जाता है, मैनुअल थ्रेशिंग, व्हेन द क्वांटिटी इज स्मॉल एंड थ्रेशिंग इज डन मैनुअली. स्मॉल बंडल्स ऑफ द हार्वेस्टेड स्टॉक्स आर थ्रैश्ड ऑन अ लार्ज सरफेस एंड दिस हेल्प इन सेपरेटिंग द ग्रेन्स इजीली. थ्रेशिंग बाय एनिमल्स, एज वी हैव टॉक्ड अबाउट कि हम बुलक्स का इस्तेमाल करेंगे, या फिर थ्रेशिंग इज डन बाय द ट्रेडिशनल वे बाय यूजिंग द एनिमल्स. फॉर दिस स्टॉक्स आर स्प्रेड अराउंड अ पोल एंड सेवरल बुलक्स आर टाइड टू द पोल एंड आर मेड टू वॉक ओवर द हार्वेस्टेड स्टॉक्स. So trampling by hoofs of the animals help in separating the grains. Threshing by machine, that I have already told you, these days harvesting and threshing are done side by side by one machine that we call as a combine harvester. So threshing machines are used for the purpose. It can be powered by either a diesel engine or an electric motor. It helps in saving time as well as the labor. So as you can see here in the picture how the ladies are doing, these are the manual work the ladies are doing here. They have taken the
heap of those what do we call the grains, and after that they are hitting on the hard material, isn't it? So bundles of stalks are there and they are hitting on a hard material so that the grains are being separated from the stalks. ओके बेटा मैं आपको स्टॉक्स का मतलब बता दूं. हमारे इधर वी यूजुअली यूज दिस स्टॉक्स इन पहाड़ी, इट इज कॉल्ड इट एज पराल. तो आपको क्लियर हो जाएगा. पराल से जब हम ग्रेन्स को यूज करते हैं, जो पराल हम गाय को खिलाते हैं ना बेटा, उसको स्टॉक्स बोलते हैं हम. ठीक है. नेक्स्ट एक टेक्निक इज विनोइंग. विनोइंग एक एग्रीकल्चर मेथड है, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. उसके बाद इट इज ऑल्सो यूज टू रिमूव वीवल्स और अदर पेस्ट फ्रॉम द स्टोर्ड ग्रेन. जो आपने ग्रेन स्टोर किया होता है आफ्टर थ्रेशिंग, उसके बाद उसमें कुछ कीड़े पेस्ट लगने का खतरा है. अगर उसमें लग भी गया है तो विनोइंग मेथड से उसको हम सेपरेट कर सकते हैं. थ्रेशिंग द लूजनिंग ऑफ द ग्रेन और सीड्स फ्रॉम द हस्क एंड स्टॉक्स इज अ स्टेप इन द शाफ्ट रिमूवल प्रोसेस दैट कम्स आफ्टर द बिफोर विनोइंग. ओके, सो हियर आई हैव टुक द few pictures of the animals, the insects or the pest which you can see in the grains. These days, this is the first picture that you can see over here. These are the weevils which you're going to see in the rice. जिसे बेटा आपने इन कीड़ों से कभी स्मेल आती हुई भी देखा होगा तो वो उसको वीवल बोलते हैं. ये देखिए नेक्स्ट है, ये जो आपने वीट ग्रेन में है, एक इंडियन मील मॉथ है. दीज डेज आपको देखने को मिलेगा, बरसात में बहुत ज्यादा होती है ये आपने बटरफ्लाई जैसी होती है. So you can see it here, and this one more weevil is here. These are called brown flower beetle, which is been present in our grains. Okay. So next here is sieving. So sieving or sifter is a device for separating wanted elements from the unwanted material, or from characterizing the particle size distribution of a sample, typically used as a woven screen such as a mesh, जाली जिसको बोलते हैं हम, नेट और मेटल. द वर्ड शिफ्ट derives from the word sieve. In cooking, a sifter is used to separate and break up the clumps in dry ingredients such as flour, as well as to aerate and combine them. A strainer is a form of a sieve used to separate solid from liquids, that I have told you. The strainer that you use, जिसमें आप चाय छानते हैं, उसको हम स्ट्रेनर बोलते हैं. चाय की जो छाननी होती है उसको हम स्ट्रेनर बोलते हैं. जिससे हम सॉलिड क्या हुआ इसमें, टी लीव्स हुई. लिक्विड क्या हुआ, जो आपको चाय मिला है. ठीक है. सो आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, आप कंस्ट्रक्शन साइट वाला भी दिखाया है और आपका घर वाला भी दिखाया है, जिसमें व्हीट फ्लावर को वो सेपरेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ सीवर. और यहाँ पे आप देख सकते हैं वायर मेश प्रेजेंट है जो कंस्ट्रक्शन साइट में आपको देखने को मिल रहा है. ठीक है. सो फॉर द नेक्स्ट टेक्निक्स में जाने के लिए बेटा हम विल कंटिन्यू दिस टॉपिक. टुमारो आई एम गोइंग टू सेंड यू द वीडियो ऑफ दिस, दैट द डिफरेंट मेथड्स व्हिच इज बीन यूज्ड इन द लिक्विड फॉर्म. So today what you have to do, you have to read these topics that we have covered. Sieving is there, and winnowing is there. Then we have done threshing, handpicking. All these are the dry methods that you cover it. Okay, and we'll continue with the next topic tomorrow. Thank you.